मेरा नाम ब्रिजेश शर्मा है और मैं पूरे भारत में साइकिल यात्रा कर रहा हूँ। मेरा कॉज है सिंगल यूज प्लास्टिक, ऑर्गेनिक फार्मिंग और पॉल्यूशन फ्री वर्ल्ड के लिए, तो जिसके लिए मैं पूरे भारत में साइकिल यात्रा कर रहा हूँ। अभी तक 36,000 किलोमीटर कंप्लीट करके मैं गोवा में आया हूँ। इससे पहले मैंने अपनी यात्रा 17 सितंबर 2019 गुजरात गांधीनगर से स्टार्ट की थी, जिसमें मैं गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, एमपी और महाराष्ट्र करके अभी गोवा में हूँ। तो मैं जगह जगह पे जाके, जहाँ गोवा में बीचेस हैं, अदर स्टेट में माउंटेन्स हैं, जहाँ लोग पॉलीथीन ले जाके, पानी की बोतल ले जाके, डिस्पोजल ले जाके जहाँ पे गंदा करते हैं, हम लोग वहाँ पे जाके सिंगल यूज प्लास्टिक को उठाते हैं और लोगों को अवेयर करते हैं। तो इस टाइप से मैं पूरे भारत में साइकिल यात्रा करके लोगों को अवेयर कर रहा हूँ। अभी तक अपनी यात्रा में मैं 7,500 से ज़्यादा गाँव और 205 से ज़्यादा सिटी में जाके ये जो कैंपेनिंग है वो कर चुका हूँ और लोगों को अवेयर कर चुका हूँ। तो 30 लाख से ज़्यादा स्कूली स्टूडेंट्स को भी अवेयर कर चुका हूँ। स्कूल्स, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाके बच्चों को सिंगल यूज प्लास्टिक क्या है और उससे क्या नुकसान है, जीव जंतुओं को, जानवरों को, ज़मीन को, तो उसके बारे में अवेयर करता हूँ। तो इस टाइप से पूरे भारत में साइकिल यात्रा करके मैं लोगों को सिंगल यूज प्लास्टिक यूज ना करने की अपील कर रहा हूँ। क्या व्हाट इज द सपोर्ट यू गेट विद दिस? मैं जहाँ जैसे जाता हूँ किसी सिटी में, जैसे कि मैं गोवा में आया हूँ, तो हम लोग अभी यहाँ पे ये लोग हैं जो कि कुछ लोग होते हैं सिटी में अवेयर होते हैं कुछ, या फिर मैं नगर पालिका के जरिए उनको कनेक्ट करता हूँ। नगर पालिका मेयर हैं, उनके वर्कर्स हैं, उनके जरिए जाके उन लोगों को सपोर्ट करता हूँ और मैं वहाँ पे लोगों को अवेयर करता हूँ। तो इस टाइप से मैं जो एमएलए हैं या फिर वहाँ के कॉरपोरेटर हैं, ग्राम पंचायत हैं, तो सभी जगह पे जाके उनको कोऑर्डिनेट करता हूँ और उनके साथ फिर मैं ये कॉज के लिए काम करता हूँ। व्हाट इज द एक्सपीरियंस नाउ विद दिस? अभी तक हम लोग मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मैं जिस सिटी में और जिस गांव में गया हूँ, तो कई सिटी और कई गांव ऐसे हैं जहाँ के लोग अगर मान के चलो वहाँ पे 10 लोगों के साथ मिलके काम किया है, तो करीब 2 लोग तो अवेयर हुए हैं और कई लोगों ने सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग छोड़ दिया है और कपड़े के थैले में सामान लेना स्टार्ट किया है। तो ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जिनके मेरे पास नाम है, लिस्ट है। और जिन स्कूलों में गया हूँ, कई स्कूल्स ने अपने स्टूडेंट्स को अवेयर करने के लिए जो भी अगर पॉलीथीन लेके जाता है तो उन पे एक छोटा सा फाइन करते हैं कि बच्चे अवेयर हों, उसके लिए 10 रुपये का फाइन करते हैं। तो कई स्कूल्स ने सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद किया है। तो यही मेरे एक्सपीरियंस और ये लोगों के साथ मिलके जितने से ज़्यादा लोगों तक मैं ये कॉज को पहुंचा सकता हूँ, तो इस टाइप से भारत में साइकिल यात्रा करके लोगों को अवेयर। So I stay in Socorro, and this is Salvador-do-Mundo, and this is the one of the most beautiful places in Goa. We just moved here 7 months back, and when we came here, I mean, we were just awed by the beauty around, and I did not expect. But one thing I did not expect is the litter. Everything was beautiful, but when I walked, सब कुछ कचरा पड़ा हुआ है रास्ते में। तो तब ध्यान में आया कि मतलब ये इंडिया ही है, ये और कुछ नहीं हो सकता है, ये बाहर का देश नहीं है। So the thing is that ये साइकोलॉजिकल है। यहाँ के लोकल्स, टूरिस्ट सभी मिलके कर रहे हैं यहाँ पे। So we are kind of helpless. अभी we are thinking of ways to educate the locals and associating with पंचायत यहाँ की। तो फिलहाल this is our third drive in the Socorro area, and yeah, so we are lucky to have Mr. Zinal and other people also join us along the way. तो आज हमने इकट्ठा किया है। कितना बैग किया? आज करीब हमने 7-8 बैग हो गया है। ओके, या तो अब हमने एक एरिया पिछली बार क्लीन किया था और फिर वहाँ पे फिर वही डंप हुआ है। सो वी आर थिंकिंग ऑफ क्रिएटिव वेज की कुछ बैनर लगा दें यहाँ पे, ताकि जो आते हैं सो दैट इफ़ दे रीड, इफ़ ओनली इफ़ अगर पढ़े तो शायद दिमाग में घंटी बजे कि ये अपनी जगह है, ये सिर्फ घर नहीं है। माय नेम सीनल एंड मैं भी आई थिंक 1 साल से गोवा में शिफ्ट हुआ हूँ दिल्ली से, और आई थिंक सबसे बड़ा कारण यही है कि आई थिंक व्हाट संदीप ऑल्सो सेड कि इट वाज ब्यूटीफुल। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस इन गोवा। आई हैव ट्रैवल्ड अराउंड 70 किलोमीटर्स इन साउथ एज वेल एज इन नॉर्थ, राइट, बट आई थिंक एवरीवेयर आई गो आई सी देयर आर दिस सम पॉकेट्स ऑन द बीचेस और ऐसी जगह जहाँ पे लोग जहाँ तक पहुँच सकते हैं वहाँ उससे ज़्यादा आई थिंक कचरा फैलाया हुआ है, राइट। एंड आई थिंक इट्स नॉट लोकल बोलते हैं कि टूरिस्ट आके गंदा करते हैं, टूरिस्ट बोलते हैं कि लोकल गंदा करते हैं, बट आई थिंक इट्स एवरीवन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई थिंक वो सबकॉन्शियसली फिट हो गया है कि हम प्लास्टिक बैग से खाना निकालेंगे और फेंक देंगे, या प्लास्टिक बैग से जो यूज़ करना है वो करके तुरंत। सो हम हमारा घर हमारा समझते हैं, बट आई थिंक बाहर का जो एरिया है, गेट के बाहर का एरिया, वो फिर मतलब किसी का नहीं है, तो हम गंदा करते हैं।
आई थिंक ये बहुत ही जागरूकता लाने की ज़रूरत है कि प्लास्टिक छोटा कचरा स्विम मतलब पूल में पानी में आई थिंक वो नहीं डिज़ोल्व होता है, सो इट रिमेन्स फॉर एवर। तो आई थिंक वो हमें स्टॉप करना चाहिए, अदरवाइज उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। आई थिंक वी कांट डू एनी प्रोजेक्ट विच कैन बेसिकली क्लीन दिस बाई इटसेल्फ, राइट। आई थिंक वो हमें कंट्रोल करना पड़ेगा एंड इट्स वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन अगर हम लोगों को जागरूक करें। Hi, my name is Dilbar, and so I and Sandeep have been coming here to this lake to, do this cleanup by ourselves. So the first time that we came here, it was just 2 of us, and the second time, then 4 people joined, and today is the third time, and we are, 7 people almost here. So what we're trying to do is, spread awareness about this cause. A lot of people, even when we talk to our friends and who would, whom we would seek to support us in this cause, people come about and say that it's a very small thing and people don't really want to, care about such causes, and that it's a very small cause for a government or for a community to really cater to. But when we look around, it's plastic use is the most dangerous, things that is destroying our planet uh, in today's time, right? And not in today's time, ever since, since decades, right? You wouldn't believe like the plastic that we would have used in our teenage years, or when I have grown up as a child in 1990s, right? That plastic still exists on the planet today. So plastic exists for almost 70 to 80 years on planet, and that's the kind of waste that we are creating every day, and consciously or unconsciously. We can choose to be conscious about it, but I think most of the time we tend to ignore it and thinking that it's a small thing and it wouldn't really matter. But when look at the heaps of plastic and garbage around in city areas, especially in a place like Goa, there are a lot of pockets here, especially including the one in which we are staying, where the municipality does not even come regularly to pick up the garbage dumps, which is very surprising for people like us to hear about. So where do we really throw this dump, right? And what is the government really doing about it to make sure that this does not continue for the next 100 decades over here? So it's a cause that we personally care about a lot, and we want to spread awareness to through whatever channel we can, and we are really grateful that you are capturing this for us today. And I hope more people come and more people realize, and even sitting at home, more people realize that it's just a small step to kind of stop using plastic as much as you can. And even if you're using some part of it, make sure you're segregating it, make sure you're kind of understand the consequences of making this choice every day in your daily lives. And You yeah, think that's government doing enough to prevent this garbage menace? sorry. Is government doing enough? See, we are very new to Goa, so we don't know how much government is doing or not. But when we speak to people around us, people who come and see us doing these things on the streets as well, what we find is that government has not done enough in a lot of areas. As I said, there's still a lot of areas around where municipality does not even come regularly on a weekly basis to pick up the garbage, which is very surprising to hear about. Imagine the kind of diseases that this could lead to. And when we even pick up this dump, which is like 7-8 sacks that we have collected today, and we go to throw in the municipality garbage areas, it's completely full. Nobody has come there to even pick up the earlier dump. So it's really disheartening to see. But I hope now with the elections around and so many people coming about and understanding the real causes or the real grievances of people around, I'm sure this is one of the causes that the government or the local municipality should pick up and do something about. Do you think people also are equally responsible for this? People are equally responsible. I don't think so we can just put the leash on government to do anything about, because that's a very reactive approach, right? People can choose to be proactive by not using plastic on an everyday basis, or using less of it and finding alternatives, making a conscious choice to segregate your garbage on an everyday basis. These are small little efforts, right, that we can do, you and I can do in our daily lives. What's your message to the people? My message is very short and simple, right? Try to use less of plastic. Even if you are using, make sure you're disposing it correctly, and make sure that people around you understand whatever levels of grades of plastic, and do more for the environment.
care about the environment, and please do not throw garbage around. It really, impacts the nature. It impacts, dogs around, so many living beings around, and we should